Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa liqni bis salihin. Fatir samawat wal ard. Anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa liqni bis salihin. Resuming from yesterday's lecture, I would like to connect a couple of points to resume the same. First point about, again, important point, vocabulary. All the languages of the world are mainly based on vocabulary, means words. It is also called diction. Diction means lughat, means word you use while speaking, writing, also you understand by listening. So vocabulary of the English language is very vast. It has versatile use. Its genres are so many: prose, poetry, drama, novel, criticism, folklore, stories for children, dramaturgy, playwriting, and many more. In all these genres, enough, we need words. If we go back 1000 years back to the history of the English language, we find Old English. Now it is obsolete or extinct. But some words are very much there. They are used by poets even now. The great giants of English literature, for example, John Milton, Francis Bacon, Thomas Gray, some others, they use Latin language in their works, in prose work, poetry, even in plays. So Latin has been the main source of communication of the English language as well. English has generously borrowed from the Latin language. As I said yesterday, once again, I would like to say, from Latin we have French, and from French we have modern English language. Most people are scared of English grammar. It is a set of rules that make you understand how to speak, how to write. All grammar comprises parts of his speech or words of his speech. Normally we call there 8, but I would like to add articles also. So in all we have 9 parts of a speech or words of a speech, right from noun to articles. These parts of a speech are base or foundation of the English language. Now, from these parts of a speech, we have certain grammar rules, and they are very important. Normally, we don't know what is use of subject, object, and verb. This topic is very important in the English language. Subject verb agreement means if the subject is singular, verb should be singular. And if the subject is plural, verb should be plural. This is called agreement, means harmony, going together. Then we have narration, means speech. Right from class 8 to class 12, we learn direct narration and indirect narration, means speech. Original speech, then converted into indirect speech. Also, we have voice. One voice that comes from my mouth. One is grammatical mouth voice, means active voice and passive voice. Unfortunately, most of us use passive voice. Passive voice is not a good English. It is used only when you are asked to convert active to passive, or when passive voice is indispensable. For example, we have some guests, we serve them. We say guests are served or guests are being served. Man is arrived. Train is arrived.
train is departed. So in such cases, we are supposed to use passive voice. Otherwise, in most cases, a good language, especially English language, is used in active voice, not in passive voice. Active voice is just like this. Passive voice just like this. It's quite reverse otherwise. Verb forms. There are three parts of a speech that have forms. One is verb, one is adjective, and one is adverb. Every verb has five forms. First form is infinitive, means masdar, with to or without to, go, write, play, eat, sing, drown. I add to it to sing, to write, to eat, to play, to sing, to eat. Without to, it is called a bare infinitive, means without to. Infinitive means first form. Then we have second form. It is called simple past tense. Then past participle means third form of the verb. Then verbal noun means present participle. When you add ing to a verb, it makes ing form. Writing, smoking, driving, reading, writing. It has three uses. One use is that it makes continuous tense. Other use it is a gerund, means noun form. Third use it is adjective. There are more than 50 ways of formation of adjectives in the English language. Dictionary gives you here and there, not at one place. I have got one sheet, complete 2 pages. How to make adjectives. It has 50 ways of making adjectives. I will give it to you all in due course of time. So verb forms are called paradigms. P-A-R-A-D-I-G-M-S. Dictionary gives two meanings of word paradigm. One meaning is base form of something. Other meaning is form of verb. As I said right now, every verb has five forms and they are known verb paradigm. Other part of his speech is adjective, positive, comparative, and superlative degrees. Slow, slower, slowest, fast, faster, fastest. Most have ER for comparative degree and ES for superlative. Some don't have, particularly beautiful, most beautiful, more handsome, most handsome. Some have both forms, ER, EST, and also more, most. They are in the dictionary very clear. Now tenses. In grammar, it means time, tempus. Other meaning is tense, don't get tense. Don't get excited or angry or emotional. Normally, people say there are more than 20 tenses. How come? There are only three tenses, and each of them has four forms: indefinite, simple past, perfect, and perfect continuous. I read a book. I read a book. I'm reading a book. I have been reading a book. Our students, majority of them, I have noted that I say so with confidence. They are very poor in grammar, bad at grammar. Most don't have sense what form of verb is required here. And as a result, we badly fail in competitive exams. For the past 30 years, Alhamdulillah, I have been teaching PC and CSS classes. My subject is AC and composition, and it is really lamentable, rather very sorrowful to know that for the past 10 years, majority of the students candidates fail in English AC and composition. Why? Don't they work hard? Are they responsible people? Don't they feel responsibility? Don't they want to go up in life? They sure do.
Reason is they miss the basics of the language. It is pity that even we don't know our mother tongue, Urdu Sindhi properly. We don't know it. So with this poor English for the past 3 years, the result has been worst ever in history of CSS exams. In Zia's time, about 40 years back, there was a special exam of CSS. When there are more seats than the required ones, so to fill up those seats, vacancies, they conduct a special exam. So that attempt is not counted. That is free. Whether you fail or pass, that is not counted. So hundreds of candidates appeared, and I think 150 were selected about 40 years back. The same chance, golden chance, candidates got last year. Last year there was a special exam, and inshallah ta'ala, I will solve that paper on board here. 40 marks, just cash, hard cash, blank check. Very easy translation, use of preposition, correction of errors, right word with right place. Very easy paper, especially 40 marks. If you go back 30 years back, you'll find teachers teaching and students learning that kind of English. I don't know what the result would be. It is not awaited, but it was really very simple, very easy paper. Why? We don't have qualified officers to join police department, public administration, income tax, foreign services, accountant, audit, and so on. So they gave this opportunity to young people to get through and have the post, join the post. Then punctuation mark. Punctuate means to stop. It is just like traffic signals. Where to stop, where to go slow, where dead halt, and where go very fast like freeway. So punctuation marks make you understand where to stop and where to continue. Right from comma to full stop. We have about 13 punctuation marks. Comma is most important punctuation mark. COMMA. Other word is comma. COMA means unconsciousness. If you don't use comma properly, sentence become unconscious and goes to comma. Comma का सही इस्तेमाल नहीं, जुमला बेहोश. And we don't know where to use, where not to use comma. Omission of comma and compulsory use of comma. To know these two things is very important. For example, panda comes, eats, supples, and leaves. With proper use of comma, you make good sense. Otherwise, it looks quite awkward. I will show you the sentence while writing on the whiteboard. See how comma works. Also, there is omission of comma at many places. They are optional or not compulsory. You can miss it. Other danger word for candidates is the definite article the or the. When this comes with vowel sound, it is pronounced the. Otherwise, the book, the pen, the boy, the girl, the college, the elephant, the umbrella, the eagle. With R sound, we pronounce the. Spelling is same. I advise my students, if you don't know use of comma or definite article, just leave it. Instead of writing incorrectly, don't write it. Don't put comma or the article if you don't know their use. There are three articles, A and the or the. A and called indefinite article. D is called definite. And also there is zero article. Zero means no use. For example, man is mortal. Right from Adam al-Islam to this day, all people are mortal. They are subject to death. Kulman alayya fan,
Kullu nafsin zaqatul maut in Quran. So such sentences don't need any article. Man is mortal, woman is frail, honesty is the best policy. In many places, with abstract nouns, common nouns, we don't use the article. So it is better to avoid such mistakes. We are glaring very bad mistakes if you use comma where comma is not needed, or you miss comma where comma is needed. Also, the same case with definite article. Spelling, the great problem of the present day students and learners. We all make mistakes. Man is to err. Forgive divine. Perfection comes with the passage of time. It takes long time. Believe it or not, when I happen to write something, I open dictionary and check my spelling, whether I'm right or wrong. Computer gives you right spelling, wrong spelling, but sometimes computer also confuses you. There is software, it gives you grammar, proper use of word, place of words, and so on, but it doesn't give complete. It has artificial intelligence, an artificial way of thinking. The best computer you are blessed with by Almighty Allah is your brain. It has no match, no substitute. It's the best software you have here. So spelling marks are the very worst marks. For example, you are supposed to use then THEN. THEN is adverb and adjective. Then is past tense of now, NOW. It's just time. And also the then prime minister. The then president means adjective. Other word is than, THAN. So then. Then when it comes to the noun or pronoun, it is preposition. When it connects to clauses to sentence, it becomes conjunction. So we have to differentiate between use of then, THEN and THAN. Dairy, DAIRY, means place where you can have milk and milk products or byproducts. So dairy. Or the diary, DIAR, book with dates. You put down your daily activities and what you're supposed to do on that day or the coming day, and the past day, what did you do? So it gives you a whole record of your activities or of your actions or what you experienced. It is diary, DIARY. We have many words from Latin and they are called base words or root words. For example, dorm, DORM means sleep. From dorm we have dormant, dormancy, dormitory, it's very big hall where students share common kitchen, common toilet, and big hall to sleep there. Most students abroad, even in Pakistan, can't afford separate fee of rooms, private rooms, or shared rooms. So they live in dormitories. So dorm word comes from the Latin language. Other example, for example, rupt, R-U-P-T, rupt means break, shadow. From rupt we have corrupt, bankrupt, interrupt, disrupt. All these words have base RUPT, means break or discontinue or make something corrupt. Other word norm, NORM means principle or rule or standard thing that you follow. From norm we have normal, normality, normalcy. From form we have formal, formality. There is Latin word corn, CARN. Corn means flesh, ghost. From corn we have carnal adjective, means carnal desire. You feel hungry, you feel sleepy, you feel some urge, maybe sexual. So this is called carnal desire. So on the base of CAR corn we get carnal. From corn we have incarnate. Some people, Hindus, Sikhs,
And Buddhists believe that there is form of reincarnation. We don't have reincarnation. They say they will come into the world again and again. If they are a good soul, they will be in the form of a good person, or otherwise in the form of a bird or an animal. We believe Muslims in resurrection. बास बाद और मौत, मरने के बाद नई जिंदगी. So that word has surrect. This word is carn, carnal, incarnate, reincarnation. This is called family of words. When you happen to open dictionary, you will find the first thing you will find will be what part of a speech the word is. Is it noun or verb or adjective? If verb, what forms are? If adjective, what degrees are? If adverb, what degrees are? You will find family of words. For example, work, worker, working, workable. We get three more words from work and different form of parts of a speech. It has synonyms as well. Work means job, deed, action, activity that you keep yourself busy in. So again, going to yesterday's handout. So we have vocabulary, something more about vocabulary. I give emphasis to vocabulary because I believe every good writer, teacher, student believes that they are like spare parts or factors. Main thing, without which you can't do, you can't speak, you can't write, you can't express yourself. So for in vocabulary, we have synonyms made with lumps test, Karachi University test, Shalatif Universities, IB, and Arur. You find vocabulary in the test. You have experience. So words having similar meaning is called synonym. Love, affection, attraction, attachment, different words giving the same meaning. But like potency of medicine, we have different uses of words. दवा की पोटेंसी ये 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, आधी गोली देनी है. Why? Because it has certain power, potency. If you go beyond that, medicine won't work. Maybe it might work otherwise, quite reverse, negative. So words used properly, right word at the right place is called word order. Word order. Add grammar to it to make it more sensible. You'll get syntax. Syntax, S-Y-N-T-X. It's also in the computer as well, I think. Syntax. So with the help of synonyms, you can add more and more your composition of your speech. Its opposite is antonym, a word having opposite meaning. Angry, happy. Satisfied, dissatisfied. Hungry, satiated. Weak, strong. Literate, illiterate. Confident, diffident. Mortal, immortal. Very hundreds of words. Antonyms you get. Then we have homonyms. Word having the same spelling, some pronouncing different meaning. For example, I said yesterday, go has 38 meaning. Math and take both words together have more than 60 meanings. And also as many phrases, idioms. Now what is phrase? What is idiom? Phrase is a combination of words that give some special meaning. It may have some word but doesn't have any subject. So phrase means istilah. A idiom means something hidden. It's a kind of phrase for something hidden. For example, I take course to Newcastle. Newcastle city in England upon the river the Tyne. Coal, but we burn in summer, winter to get heat. So take coal to Newcastle means take a thing to a place where it is already available plenty or it is not needed there. मैं लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, किताबें लेके जा रहा हूँ, किताबें वहां मौजूद है. मैं गर्मी के मौसम में संदरिया मीरपुर खास लेके जा रहा हूँ दोस्त के पास. अचार मैं शिकापुर लेके जा रहा हूँ. दिस इज टू कैरी कोट टू न्यूकैसल. वो चीज वहां ले जाना जो पहले बकसर मौजूद है या उसकी वो जरूरत नहीं है.
We have 25,000 phrases and idioms, and dictionary is full of phrases and idioms. If you take Oxford Dictionary, latest edition, 10th edition, it now costs about 3,000 with discount. I think it's cheaper than your chappal, Hawaii chappal. Chappal se bhi sasti hai. But we can't afford for that purpose. We can buy 50,000 mobile phone, even costlier than that, but we are not in a position to buy some good dictionary for our future, for our progress, for our learning and for our scholarship. That's pretty. Have some fun or interest, keen interest for education that will be paid in the long run. This is real investment. Your investment of time, investment of money, investment of effort. That will be rewarded. Take it for sure. Granted. Then we have homophones. Words having same sound. Phone. Pair. P-A-I. Pair. P-A-R. Tarashna nothing. Pair. Pair. P-A-I. Homophones. Also, we have acronym. When we take a letter from word and make a word that can be pronounced, United Nations Education Scientific Cultural Organization, UNESCO, United Nations International Children Fund, UNICEF, Sakhar, SAPCO, Sakhar, company of supply of electricity. So these words are called acronyms. And some words don't have acronyms. UNO, you can't call it UNU. IMF, you can't say IMF. IMF separately, UN or UN separately. These are called initials. Also, we have contractions. Cannot, can't. Do not, don't. Will not, won't. Is not, isn't. These are called contraction. Mukhafif. Short form. Abbreviations. They are also counted in short form. PROF, prof, means professor. MRS, Mrs. MRS, Messrs. They are called abbreviations. Mukhafif. Now, one thing to bear in mind here, if first letter is there and last letter is there, then you don't need dot at DOCT or doctor. D is first letter, R is last letter. We don't need now dot here. Professor, P is the first letter, R is the last. We write PROF, which now dot is necessary. So these things are counted there. बड़ी मेहनत से कल भी मैंने ये बात बताई कि हमारा सिंधी बच्चा नौजवान माँ के जेवर बेच के सूबेदार बनना चाहता है, लेकिन एसपी नहीं बनना चाहता मेहनत करके। हम क्यों नहीं बने? क्या वजह है? हमें तो पेट में रोटी भी इतनी थी कि ये गुजारा हो जाए। सारा दिन मजदूरी करना, क्लर्की करना, शाम को जाके पढ़ना, वापस आना तो ऐसे कांपते थे भूख में। आप तो बड़े अच्छे दौर में पैदा हुए। You can make marvels. You can make best of your time, energy. You can make marvels. You can surprise the world. I believe. I believe. You people are great. You can make marvels. Anyway, so you have to mind your language. मैं क्या लिख रहा हूँ? वर्ड चॉइस क्या है? यहाँ लफ्ज फिट है या नहीं है? यहाँ कौन सी चीज आएगी? Anyway, not like doctors these days. सब यहाँ रह जाएगा धरे का धरा। अलमाल वल बन जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात खैर रब्बी का खैर ना मरा। ऐसे आप सब सूरह कैफ में वही रहने वाली चीज है। सुनते हैं कि फलां गया मेरे हाथ खाली है, मुझे लोगों को दिखाना। फलां क्या कह वसीयत कही कि मेरे हाथ खोल के दिखाना। ये नहीं कि आपको रोटी के लिए मना किया है, आपको कमाने को मना किया नहीं, नॉट एट ऑल। इस दुनिया के लिए इतना करना है जितनी यहाँ रहना है, उसके लिए इतना करना जितना वहां रहना। सूरह बकर के शुरू में मोमिन की निशानियां बताई गई हैं। साथ मोमिन की, एक इंसान है, एक मुसलमान है, एक मोमिन है, तीनों में फर्क है। वो निशानियां अगर आ जाए, उस पर अमल हो जाए तो जिंदगी जन्नत हो जाए। एनीवे,
कमिंग बैक टू, ये कभी कभार हमें एज टीचर दौरा पड़ता है, वो तो हम थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं, और हमारा काम भी है। हम नहीं करेंगे तो फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्ता वोंट कम हियर। हाँ, वो तो हमें हमारा काम है। हाँ, उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, simple word and compound word. Simple may be as small a, o, or, on, in, and complex means. अच्छा, simple may be photography, pornography, paraphernalia, encyclopedia, having 13, 14, 15 letters, even more than that. And compound word is when you use two words together. Father-in-law, mother-in-law, commander-in-chief, sister-in-law, brother-in-law, they are compound words. And all together, as I said yesterday, there are about 117,147. 1,17,147 ये एक साल पहले की बात है। अब हो सकता है नए वर्ड डिक्शनरी में आ गए। आप तो ऐसे दौर में पैदा हुए कि व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, अगर वो लोग उसको पब्लिक कर रहे हैं, यू कैन सी हियर। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अगर वो पब्लिक कर रहे हैं, यू कैन वॉच हियर एट द सेम टाइम। नो reservation, no पर्दा, no nothing hidden for your from you. Word order in sentence. For example, word only. Her only son died in a war. Now she had only her only son. Her son only died in a war, but nobody else except her. Her son died in war only. He undertook many adventures. Did a lot. Where did he die? In war. उसी लफ्ज को मुख्तलिफ जगह रख पे माने और निकले, इसको वर्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड ऑर्डर। और एम्फेसिस के लिए राइटिंग में कभी कभार यू आर सपोज टू रिपीट वर्ड्स, लेकिन एक वर्ड को बार बार नहीं रिपीट करना, ये मोनोटोनी हो जाएगी, ये रीडर को इरिटेट करेगा। तो ऑर्डर आपके चॉइस होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। और ये हाउ डज इट कम? इट कम्स थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग। Extensive reading. The more you read, the more you come to know about use of words and vocabulary and right word in the right place. And that is key to very good communication and oral communication and written expression. Then we have clauses. A clause is a part of sentence that has a subject and a verb. It has four kinds: independent clause, dependent clause, means principal clause, and coordinating clause, means joining clause. And there are clauses which really make very great composition. How do they come? Sometimes you start writing with verb with ing. Taking exercise every day is a good habit. That means your subject is taking exercise. You take exercise, I take, she takes, we all take. But no mention of subject here. What is subject? Taking exercise. So this begins with the present participle. When they are alone is risky. वहां अकेला जाना खदशे का बायस, नुकसान हो सकता है। दिस इज सेंटेंस बिगिनिंग विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। So with present participle, past participle, present perfect participle, potential subject, other subject, you can make subject. Subject can be noun, a pronoun, a verb. Even with preposition, you can begin sentence. Subject follows it. In the early morning, we set for our journey or our destination. तो शुरुआत तो इनसे आया, सब्जेक्ट कहाँ आया? We आया. Now, in some subjects, you have to see it is singular or plural or collective. For example, word jury, Jury. Jury is the group of people who are legal experts. They sit in a court of law. They listen to the hearing, what is going there, comments, and they gave their expert legal opinion. They are not supposed to give degree or judgment. It is a function of the judge or magistrate. Jury are simply supposed to give their opinion. If the jury are united, an entity, and one, like a bond,
subject, singular, verb, singular. The jury is in session. Means they are very much there and they are considering the case. Now, when they have different opinions, they are now individuals. The jury are divided in their verdict. Their members of jury have different opinions. They disagree on certain matters. They are not unanimous, they are united. The jury will be plural subject, it will take plural verb. The same with army, committee, board, and many other words. Most common nouns can be used singular and plural. Most collective nouns can be used singular and plural. Depends on how you use it. Now we are at muddled sentences. Muddled means hodgepodge. You don't know where sentence should be started, where it should come to an end, where should be verb and subject or object. That is called muddled sentence. Means gadmut, mix up without any proper sense. Then jumbled sentence. If I say an old man sits under a tree, I say under a tree an old man sits. Maybe it be political, but doesn't sound good. First I should use who sits under a tree and where does he sit. An old man sits under a tree. एक पुराना दिलदार भट्टी का प्रोग्राम आता था, बड़ा अच्छा कंपेयर था. अबाउट 40 years बैक की बात करो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था. बच्चे से पूछता है कि भाई वो इंग्लिश का प्रोफेसर था, बड़ा अच्छा काम वाला, पंजाब का. दरवाजा बंद कर, किल द डोर, बुआ मार. बुआ माने दरवाजो, असाई बुआ सिंधी वाली बुआ ने दर वाली बुआ. मार माना बंद कर. तो बच्चे को जो समझ में आया, बुआ मार माने किल द डोर, shut the door होना चाहिए. So if we go for literal translation, this will be very strange. मैं गया और ऐसा गया कि गया ही गया. I went और ऐसा went कि went ही went. When really mean I went and never returned. Never आया. तो ये हमारी गुलाबी अंग्रेजी से हमारा सत्यानाश कर. फिर कोई बोलता भी है तो उसको कहते यार तुम जो पीढ़ी को अंग्रेज जोड़े. अरे सिंधी कह रहा है, सिंधी छोड़ कर रहा है, सिंधी कह रहा है, फारसी कह रहा है, पहाड़ी वाली बोली कह रहा है, जेको ॻाल्हि. पर हिन को साथ को या तो तव्हां मुंहिंजे कलर्स कयो, या तो चाइना रशिया और जापान बन जाए और मुल्क बन जाए, या फिर आपको बिल्कुल ही बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट माना नो अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश. ऐसा तो यूएसए भी नहीं है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है. You have to have English if you tried it. You have to master it for good communication. There's no other way. Now, kinds of verbs. This is most important part of the English language, like other languages. Verb means work. Some deed, some job, some function, some activity. Now, some verbs are state verbs. Is, am, are, was. Sit. It is state. I just sit. I don't do anything. I'm just sitting here. Recline. So some verbs are inactive action verbs, like state verb. Some are action verbs. Some are verbs of perception. You feel, you deem, you think, you observe, you calculate in your mind, you reckon, you assess. These are verbs of perception. इनका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से, किससे? माइंड से. बाजार देखने में कोई काम नहीं, न लिखना न पढ़ना. Even when you sleep is action, but it's passive action. You take rest. The nervous system is quite at rest. The body is at rest. You enjoy sleep. So that is called verbs of perception or inactive verbs. Then we have verbs do, did, and does. Unfortunately, most students, when you go through their answer books, right from PCS, CSS, or right from college level, they don't have sense where to use do, where to use did, and where to use does. And really, it quite strange. Do is used with plural subject.
Does is use singular subject, and did is used both singular and plural. Do and does in present tense and did in simple past tense. Omission of verbs. In some sentences, first verb works well. Is ready about to leave. Mana he is about to leave is already used. You don't need use of is again. All is well, that ends well. यहाँ two things. हर वो चीज बेहतर जिसका इख्तिताम अच्छा. All is well, that ends well. Now you're supposed to use two words. In some cases, word repetition of verb renders the sentence incorrect. Then we have omission of words, that's over. Modal verbs. There are 11 modal verbs. Will, shall, can, could, may, might, are, should. They are called modal, M-O-D-L. They help other verbs to help complete the sentence. For example, in normal sense, shall S-H-A-L-L is used with first person singular and plural. I shall help you. I shall be there. I shall be very much with you. In first person. With second person, we use will. You will, they will, it will. Rule number 3. When I mean promise, certainty, assurance, threat, compulsion, then will is used instead of shall. I will be with you. I will help you. We will be there with you in all circumstances. यहाँ वायदा हो, यकीन हो, इसरार हो, पक्का हो जे, उसे शल जे बजाय. May का माजी might. Past tense में भी present. Can for ability. May for permission. For permission. Must, should, could. They used in present and past as well. If you mean something quite certain, you must be there. You should be there. You ought to be there. Depends what meaning your sentence carries. What you mean. आप बहुत अच्छा जरूरत कहते हैं या दरमियानी या कम. शुड आएगा, आट टू आएगा या मस्ट आएगा. इट डिपेंड व्हाट सेंस. इनका इस्तेमाल लिखा हुआ बड़ा फर्स्ट क्लास. काफी अरसे की बात है. सैयद मुज्तबा शाह कोटाई सैयद थे, फौत हो गए. मासूम से लाइब्रेरी के अच्छे लाइब्रेरियन थे. बच्चों को पेपर की कापी देना, किताब देना, जाओ बाबा फोटो का पकड़ा पढ़ो जाए. बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा है. सर्दियों का मौसम था. यही दिन थे शालीमार सनीमा के पास जहाँ इस्लामिया कॉलेज भी है, वहाँ मौसम शाह लाइब्रेरी है. शाह साहब बाहर किताबें निकाले, काफूर की गोलियां भी सहजे हटकर करें, उनको झाड़ भी रहे. आदमी की फितरत ने पूछा, सही सही छा था कयो प्यार जैसे केतरा साल गुजरिया है ने एक किताब को पढ़े भी कौन थो, उड़े ही खाए थी इनकी सफा करे वरी काफूर जी गोल रखता. किताब कहाँ, कोई ढाका का, कोई चिटगांव का, कोई कराची का, कोई लाहौर का. पुरानी रकम, 1 रुपया 2 आने, 2 रुपया 4 आने, 4 रुपये 6 आने, ये कीमत. पढ़ने वाले हल्या, पढ़ने वाले चले गए. तो ये भी, हालांकि उन किताबों की क्या बात है, आज के मुकाबले बड़े बड़े अच्छे राइटर थे. We don't have such great writers now. We have their books, but we don't go through them. Don't go through. They are just their piles of books lying there. They are eaten by termite. उड़े ही खाए थे मुझे पढ़ने वाला को. Anyway, I remember हमारे मरहूम वीसी साहब निसार सिद्दीकी उस लाइब्रेरी में तैयारी करते थे. हम उन दिनों में वहाँ पे शायद BA पार्ट 2 में थे या MA प्रीवियस में थे. इस्लाम का शामिल है. अभी वो कॉलेज है जहाँ हमारे शागिर्द पढ़ा रहे और रेगुलर क्लास होती. क्या वजह है, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हमारे घर में सुकून नहीं है, क्यों हमारी रोजी में बात में हलावत नहीं है, क्यों हमारी नींद हराम हो गई है कि हम अल्लाह से अलग हो गए. हमने हर एक ने इजी जॉब शॉर्टकट ले लिया है. नौकरी भी है करनी है, इम्तिहान भी पास करना, जिंदगी भी गुजारनी है. जिंदगी तो गुजर जाएगी, वो तो गुजर जाना है, तेरा इंतजार नहीं करेगी. तो अपना टाइम इस्तेमाल कर या जाया कर, इट्स अप टू यू. Anyway, use of prepositions. Pre means before,
पोजीशन मीन्स प्लेसमेंट, कहाँ रखना है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी ट्रिकी part of speech preposition. There are 3 kinds of prepositions: simple preposition, compound preposition, and phrasal preposition. Look into verb followed by preposition. Go over verb followed by preposition. दो अल्फाज का है तो कंपाउंड, into, upon, onto, along with, ये तकरीबन 8 है। दो अल्फाज की प्रेपोजिशन को कंपाउंड प्रेपोजिशन और सिंपल दे आर 37। हाउ मेनी? और फ्रेजल प्रेपोजिशन सैकड़ों हैं, सैकड़ों फ्रेजल प्रेपोजिशन जो फ्रेज बनाती है, 2 या 3 अल्फाज का मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी नहीं है, लेकिन वो फ्रेज है। हाँ, वर्बल प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस फॉलोड बाय वर्ब्स या वर्ड्स फॉलोड बाय, वो है बराबर। तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका प्लेसमेंट भी है। Most prepositions are used somewhere in between sentences. I go to school on foot. Marco Polo, Nepolo Polo, and Nephi Polo, they went to China during the regime of Kublai Khan by foot. कैसे बाय आया? स्कूल गया, बैंक गया, ये काम कराया, वो काम कराया, तो ऑन फुट था। लंबा सफर है, लंबी मुसाफत है, काफी घने जंगल में से जा रहे, रेगिस्तान है, तो ये बाय फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, किताबों में मौजूद है, ये ख्याल करें। 90% लोग बाय फुट लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। पैदल के लिए ऑन फुट आएगा, लंबे सफर के लिए पैदल के लिए बाय फुट आएगा। उसके बाद अच्छा, दूसरा इस्तेमाल प्रेपोजिशन का जुमले के शुरू में या जुमले के आखिरी। हैंड्स आर टू वर्क विथ, द आईज आर टू सी विथ, द लेग्स आर टू वर्क विथ, द पेन इज टू राइट विथ, आखिर में आए। तो प्रेपोजिशन का ज्यादा इस्तेमाल जुमले के दरमियान में है और शुरू में भी आ सकता है, आखिर में भी। डिपेंड्स हाउ यू यूज। पोएट्री में अल्फाज का इस्तेमाल अलग है, प्रोज में अलग है। नॉवेलिस्ट अपने हिसाब से लिखता है, बड़े बड़े नॉवेलिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोज राइटर गुजरे हैं, वो अपने हिसाब से अल्फाज को समझ, उनकी कलम में ताकत है। दे हैव गॉट लाइसेंस, दे हैव गॉट लाइसेंस। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली एयर में एस नहीं आता, HAIR, एस नहीं। मैंने कितने भी बालों जानवर के जिस्म पे, आपके जिस्म पे, हमारे जिस्म, सिर्फ अपना बाल कोई नहीं लेता, अपने गुरु के मुताबिक जिस्म का कोई बाल नहीं तोड़ता। सिख अपने जिस्म का बाल नहीं तोड़ता, हम अपनी दाढ़ी रोज मूंटते हैं। माइंड न करना, सच्ची बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। 80% मुसलमान रोजाना 2 कबीरा गुनाह करता है। सुन ले कौन से, गलत हो तो हम मुंह पे कह देना। 80% नमाजी जो जमात में मिलते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, ये कबीरा गुनाह है, तौबा के बगैर माफ नहीं है। 80% मुसलमान दाढ़ी मूंटते हैं, कईयों को रोका टोका, बड़ा हाथ जोड़े, नहीं मानते, नहीं मानते। ये क्या है? ये किस्म की ऐसी हैबिट है, क्या पता। आंखों से देखा, जहाज में साथ था, जाते वक्त भी साथ था, वापस भी साथ आया, कराची एयरपोर्ट पे पहुंचा, दाढ़ी मूंट दी। क्या फायदा? क्यों रखी थी? किसके लिए रखी थी? नबी को तो पता तू आया है, उसने बुलाया अल्लाह ने, फिर ये दाढ़ी के साथ क्यों असर करे? या तो रखता ही नहीं, रखता तो उसकी लाज रखता है, नहीं बरा। एनीवे, तो अब ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश, direct object, indirect object. The person who is given something is called indirect object. The thing is direct object. जो चीज दी जा रही है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब जानवर हो, किताब हो, अंगूठी हो, कैमरा हो, कोई और चीज हो, किताब, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट डाउन वन सेंटेंस। फादर गिफ्टेड मी ए रिस्ट वॉच, लिखे, फादर गिफ्टेड मी ए रिस्ट वॉच। Father gifted me a wristwatch for my birthday. For my birthday.
Father gifted me a wrist, WRIS, wrist watch, कलाई घड़ी, for my birthday. यहाँ भी ग्रामर वाली असली बात सुनने और समझने वाली है। पहले ये समझे कि कौन सी चीज दी गई है, रिस्ट वॉच, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया है, वो इनडायरेक्ट। ये भी जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जानदार हो बेजान ना हो, नहीं नहीं, बेजान हो जानदार हो, ऐसा भी नहीं है। दूसरा जुमला लिख, प्रॉस्पेरो शेक्सपियर का प्ले है द टेम्पेस्ट, उसका जुमला लिखवा रहा हूँ। प्रॉस्पेरो, PROSPER, PROSPER, प्रॉस्पेरो GAV मिरांडाज हैंड, मिरांडा का हाथ दिया उसको, MIRANDA सॉरी के दरमियान ए पास, टू फर्डिनेंड, टू फर्डिनेंड। यहाँ सब्जेक्ट है प्रॉस्पेरो, मिरांडा का हैंड दिया, मना ये तेरे रिश्ते अज़वाज में तेरी बीवी है। किसको दिया है, फर्डिनेंड हीरो को। ये तीनों कैरेक्टर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में लिखवाया आप। तो सब प्रॉस्पेरो हो गया सब्जेक्ट, मिरांडाज हैंड डायरेक्ट हैंड ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट हैंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया है, फर्डिनेंड, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो मिसालें लिखवा, इसके अलावा सब्जेक्ट्स, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, living, non-living, seen, unseen, even buildings may be. Taj Mahal is the one of the wonders of the world. तो सब्जेक्ट क्या हुआ, द ताज महल, है ना। मिनारेट ऑफ पीसो, इटली में झुका हुआ मीनार, है ना, ऐसे ही खड़ा है स्ट्रक्चर बरसों से, ये सब्जेक्ट है। बेजान चीज, हिस्टोरिकल प्लेस, इवन दरख्त सब्जेक्ट हो सकता है, बड़े वो काम करे ना करे। उसके बाद डैंगलिंग और मिसप्लेस सेंटेंसेस, ऐसे क्लासेस जो मिसप्लेस उनको डैंगलिंग कहते हैं। राइट डाउन सेंटेंस, एन ओल्ड मैन sat under a tree, an old man sat ASAT under a tree with wooden legs, with wooden legs, WOODEN, wooden legs, LEGS. Now whose legs are wooden, tree or the old man? किसकी टांगे अब मसनूई है, बाइसाइकियां हैं, ओल्ड मैन। ये डैंगलिंग क्लास है, डैंगलिंग मॉडिफायर है, वो लफ्ज जो अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की माना में फर्क लाया, तब्दीली बताया, वो कहाँ आएगा, एन ओल्ड मैन विथ वुडन लेग्स, पहले ओल्ड मैन के साथ आएगा, वो उसकी कहाँ टांगे, वो कहाँ था, वो बाद में आएगा। एन ओल्ड मैन विथ वुडन लेग्स सैट अंडर ए ट्री। तो मॉडिफायर में ना एनी वर्ड्स दैट ऐड टू द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो मसनूई टांगे हैं, बैसाखी हैं, काठे जो मसनूई, वो वण जो है या कोपड़े जो है, ये डैंगलिंग का सही जगह रखें, उसको डैंगलिंग कहते हैं। डैंगलिंग में मिसप्लेस। Now use of collective nouns. There are 5 kinds of nouns and collective nouns one of them. Collective noun can be used as common nouns like team, army, jury, board, committee. Depends how you use them. भाई इतना जोर से nouns and material nouns. Collective noun, use of collective noun is very important. You have to see how they are used as common noun and as collective noun. For example, our Pakistan team is leaving for Australia to play there. Maybe test match, maybe 1 day or 20. So team is collective. आधा जहाज उनसे भरा हुआ है, डॉक्टर भी साथ जा रहा है, कोच भी जा रहा है, आधे जहाज उन्होंने साथ, तो वर्ब सिंगुलर लिखे, पाकिस्तान टीम leaves for Australia. The Pakistan team leaves for Australia. Now here we mean that it is a unity, an entity, a body going together somewhere to play there. Understand? अब पाकिस्तान टीम के मेंबर फील्ड में हैं, हर मेंबर अपना अपना रोल अदा कर रहा है,
विकेट कीपर से लेके बॉलर से लेके फील्डर क्या प्रकार इंडिविजुअल्स हैं। तो अब यहाँ पर जमा हो जाएगा, लिखे द पाकिस्तान टीम आर ट्राइंग देयर बेस्ट, माने इंडिविजुअल्स हो गए। हर फील्डर हर पॉइंट पे खड़ा अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, बॉलर से लेके विकेट कीपर से लेके फील्डर तक। द पाकिस्तान टीम आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आर ट्राइंग देयर THEIR for a breakthrough, for a breakthrough, BREAKTHROUGH, one word, BREAKTHROUGH। पाकिस्तान टीम फील्ड में है तो ब्रेक थ्रो क्या हो, या कैच आउट हो, या रन आउट हो, या क्लीन बोल्ड हो, है ना बराबर, मैंने विकेट की कोशिश कर, विकेट मिल जाए। देखिए अब वहां पहले में टीम को कलेक्टिव बताया, वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ टीम को इंडिविजुअल बताया, वर्ब भी जमा है और प्रोनाउन भी जमा है। जब ये चीजें बेसिक्स आ जाएंगी, थोड़ा इस पे काबू हो जाएगा तो बड़ा अच्छा। यहाँ पे खुशी शाह आए थे, बड़ी अच्छी बात कर गए। यही बात उन्होंने ऑडिटोरियम में कही पिछले हफ्ते कि हमारे बच्चों को दो चीजें की बहुत जरूरत है, एक राइटिंग और रीडिंग, और दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। हम अपने VC साहब को खुशगुजार किया है, हम उनको अर्ज करेंगे कि इनको कंपल्सरी कर, भले नॉन कैंडिडेट हो, समझ गए ना, अभी ट्रांसक्रिप्ट में नहीं आए, लेकिन कंपल्सरी हमारा अटेंड करना है, बड़ा जरूरी है। अल्फाज का इस्तेमाल कैसे होगा, रीडिंग कैसे होगी, यहाँ प्रेज है या ईडियम या कौन सा क्लास है, ये वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है नहीं बराबर। Verbs having 3 different positions. Verbs are called strong words. Swim, swam, swum. Run, ran, run. Write, wrote, written. Eat, ate, eaten. They are 3 different forms. They are called strong verbs. Verbs having T, D or ED in the end are called weak verbs. तो वीक वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब को इरेगुलर वर्ब। चलो ये टर्म आपको न भी आते हों, डेफिनेट या डेफिनेशन न भी आती हो, इतना सेंस हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ कौन सा लफ्ज आएगा, इसकी स्पेलिंग क्या है, यहाँ फिट है या नहीं। जैसे एक नर्स को कहा जाता है, भाई इस बाबा का ख्याल करना, बाबा हमारे बीमार है, हम तो ड्यूटी भी जा रहे हैं, या कोई बच्चे की ड्यूटी लगाए, बाबा बच्चे बाबा को ये दवा देना, बाबा को सही टाइम पे दवा नहीं मिली, या बाबा की दवा की पोटेंसी नीचे ऊपर हो गई, या दवा रह गई या बाबा रहेगा। ये भी ऐसा ही है, सुनने वाला कहेगा क्या बोल रहा है, पढ़ने वाला कहेगा अच्छा लिखो है, खबर ना अच्छा तो छोड़ है ना। और आजकल तो खुला मैदान है, इसका हम गवाह हैं, अल्लाह भी गवाह है। 32 जिले थे, 32 जिले और 761 कैंडिडेट, 198 हमने लिए मेरिट पे, हम सबको ऑर्डर मिला है, हमें पता है किस किस को मिला है। उसके बाद SS का इम्तिहान हुआ 17 ग्रेड का, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट हुए हैं। IBA में जो लड़के हमारे नौजवान पढ़ा, 7 आदमी मैथमेटिक्स में लेक्चर हो गए। कभी लेक्चरर की तनख्वाह 450 रुपए थी, बेरोजगार नहीं है, हिम्मत नहीं है, मेहनत नहीं है, मेहनत। भाई अगर तू ऑफिसर नहीं बना, क्लर्क बन जाए यार, 35-40 साल मिलेंगे ना, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। वर्क इज वर्शिप, ला तकरो तो मेरे रहमतुल्लाह, बिल्कुल आगे दरवाजे खुले हुए, क्या बड़ी बात है ना मेरा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक मुसलमान के लिए यहूदी के बाग में काम करके उसका कर्जा उतारा, हज़रत अली सही, कितनी बड़ी शख्सियत है ना बरा। तो मेहनत भी आला मेहनत थी, शख्सियत भी आला थी, काम भी आला था, उन लोग ऐसे काम किए। क्या टाइम हो रहा है? क्वेश्चंस, ये भी चलेगा सिलसिला, चलेगा, साथ में ये दौरा पड़ता है, ये भी चलता रहेगा, ठीक है ना। शायद कभी काम कर जाए, शायद कभी बात दिल में उतर जाए। वंस अगेन मौके से फायदा उठाते हुए, आज फजर की नमाज जमात से किसने पढ़ी? वेरी गुड, वेरी गुड। 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। कजा की भी जजा है, कजा की भी सीधी वाला जजा नहीं, मैं तुझे करो जजा है सब आइए, तो जजा नहीं है। हासिल भले क्यों, एक बात कर दो फिर बंद करें।
हदीस का पूरा मफहूम तो याद नहीं, अल्लाह माफ करेगा, हमारे आलिम साहब बैठे हुए हैं। प्यारे सोने नबी ने फरमाया जितना भी मालूम मता है, सीमो जर है, जो भी चीज आपको बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, दिलकश है, वो एक तरफ फजर की दो रकात, एक तो सही है बराबर, और अगर उसके बाद आपको दो नफल इशराक के मिल गए और नमाज कुरान की तिलावत भी आपने की है, यकीन जाने सारा दिन आपका अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आजमाई हुई चीज, आजमाई हुई। बाकी जो चीज तकदीर में है आके रहेगी, मौत का दिन है तो वो भी आके रहेगा अटल।